डायनामो की बात करेंगे। तो ये जो आज की ये क्लास होगी, इसमें हम इंफ्रावर्स डिस्कस करेंगे पहले, और उसमें हम पेडेस्ट्रियन सिमुलेशन करेंगे, फिर हम डायनामो की तरफ चले जाएंगे। तो ये हमारी दो पार्ट में आज की क्लास होगी, एंड आई विल ट्राई टू कंक्लूड दैट इन एन आवर। तो अभी जरा आप कह रहे थे कि आई एम वेरी थैंकफुल टू द इंस्ट्रक्टर। आई एम थैंकफुल टू यू फॉर लेटिंग मी स्पीक. Here is an example. Arfa Karim, you might know, and when she was asked, so she said that people say I am a genius. I might be one, but I am not the only one. There are many other Pakistani girls and boys like me. All those gems need is a little bit of polishing, and I will do it. That's my aim. So, and then एक अलग एक मूवी है, मेरे ख्याल से आप लोगों ने देखी होगी, लूसी। दैट्स आपके लिए एक कोटेशन है, उसमें ये है कि द सोल पर्पस ऑफ लाइफ हैज बीन टू पास ऑन व्हाट वाज लर्न। तो हमने यही एम था हमारा कि हमें जो आता था या हमने जो सीखा है वो आपको पास ऑन करे। तो ओके, नाउ दिस हैज बीन सम ऑफ द लर्निंग मटेरियल। ये पहला जो है आप देख रहे हैं, इसमें पहला जो है मोबिलिटी सिमुलेशन एंड फॉरवर्ड्स, इसके बारे में है, और दूसरा और तीसरा जो है ये डायनामो के बारे में है। यूट्यूब की वीडियोस है, एक सीरीज ऑफ वीडियोस है। तो काइंडली आप इनको फिर देख ले, आपकी नॉलेज में बहुत इजाफा हो जाएगा। नाउ लेट्स स्टार्ट इन्फ्रावर्क्स। तो आपको इन्फ्रावर्क्स आपकी स्क्रीन पे शो हो रही है? Yes, sir. Okay. Now we will open that same model, which was in Peshawar near university. And what will we do in this model is that we will try to create a pedestrian simulation. So in the previous class, as you all know, that we have created a traffic simulation. So in this class, we will create pedestrian simulation with that traffic simulation. तो उसमें हम पिछले क्लास में आई एम श्योर आपको पता होगा कि हमने जो है एक मॉडल किस तरह क्रिएट करते हैं इंफ्रावर्क्स में, वो हमने कहा था। फिर हमने बुक मार्क्स और प्रपोजल किस तरह बनाते हैं, रोड्स किस तरह बनाते हैं, उसमें चेंजेस किस तरह करते हैं, क्रॉस सेक्शन और प्रोफाइल के उसमें। ट्रैफिक सिमुलेशन को हमने डिस्कस किया था। ट्रैफिक सिमुलेशन की सेटिंग्स हमने डिस्कस की थी कि उसमें किस तरह से हम चेंजेस करेंगे। अभी हम इस इंफ्रावर्क्स में क्विकली एक पेडेस्ट्रियन सिमुलेशन रन करते हैं। So I will go to that bookmark which I have created in that previous class, and I will go to my study area. Now, in order to create the pedestrian simulation, what I will do is I will go to this Analyze tab, and I will click at this mobility simulation. Now, when I click, so box will appear. आप देख ले, यहाँ पर हमने आपको याद होगा, यहाँ पर हमने वो ट्रैफिक सिमुलेशन हमने रन की थी। तो पेडेस्ट्रियन सिमुलेशन को रन करने के लिए हम क्या करेंगे, आई विल राइट क्लिक एंड आई विल क्लिक दिस मोबिलिटी सिमुलेशन। So it will take some time, and when I click this mobility simulation, so another window will appear. As you would remember that when we were creating traffic simulation, so when I click, so a window was appeared which was traffic analysis panel tab. Now here another window will appear, and this time it is
mobility simulation window. So it is taking time. Achha. Here you can see that I have that window. Now what I will do in it, uh, I have created a crossing on this road. This is zebra crossing. So what I will do, I will try to delete this and create a new. So I will go to this layer and hide this image. So under this layer, I will, and this image, I will click this, and this image will be gone. Now to delete this, what I will do is that I will click this, sorry, I'll delete this area as well, delete this, and this will also, I will delete this. Now, here you can see this blue lines. So first I will create a walkway. So how I will do that? I will right click, and under this walkway I will say new walkway at cursor. Now its width is 2 meter and its length is also 40. So I will change that to 4 and let's make it 25 or 30. So here you can see that I have created a walkway. Now I will drag over here. Now you can see that its elevation will be different. The road elevation will be, if I check, so I will under this geometry, so its elevation is 370.76. So I will make, I will copy from here and I will change the elevation of this walkway also 370. So under this geometry, change height, and I will make it 3, let's make 370.76. Okay. Now what I will do is I will copy this under edit and copy. Now I will paste that. So I will drag that to here. Okay, now let's create area. So for area, what I will do is I will drag this walkway to this rectangle. So I will right click and drag this walkway to here. And under this area, I will right click and this area, I will say new area at cursor. But I have to change its elevation too. So what I have to do is I have to click this and I will say adjust. Now under the, so here in base, I will type 369. Sorry. Three 68, let's make that. And the height will be, let's make that 6. And I'll say apply.
Now I will close that, and same thing to this walkway as well. I will click, and I will under this area I will say new area at cursor, and I will change its height as well. Let's make that again 368, and height will be 6 meters. We'll say apply and close. Now let's create a crossing, a zebra crossing over here. Now for that, I will click this road, and I will say under this lane, I will say new crossing, and I will say unsignalized pedestrian right of way zebra, and start position. It will be here as from start, and I will say OK. So the width will be 4 meters, same. I will say OK. Now I will connect this to this. So for that, what I will do, I will select this, and I will select first this, and I will select this also, and I will say uh, under walkway, I will say new connection. So here you can see that they are connected now. And now here the same thing, I will select this, I will select this, and I will say walkway, and I will say new walkway. Uh, Sorry, what happened? Actually, I will select this, I will select this, and I will say new connection. Okay. Now this connection has been established, but now what happened over here? Now let me again connect this. There is some problem, I don't know. Know what's happening. Chale. Let me again do this exercise. I don't know. Uh, Under this lane, I will say uh, new crossing, and it's zebra. Let's make that 4 meter. Okay. Now I will connect this. It's walkway, new connection. Okay, and here walkway, new connection. Okay. Okay. Now this connection we have created now. Now what we will do is we will try to create the again this demand matrix. So for that, what we will do
is we will go to this demand, and under this demands, we would try to let me delete this. Okay, now this this demand, this matrix one, uh, this is of the traffic simulation. Now let me create another matrix which will be for the people. Now I will click here and I will create this matrix for the people. Acha. So from here to here, I want that, or let's say from okay, from here to here, I want that 20 people should be moving. So I will say that here it will be 20 people. Now I will click OK, and under display I will say content. So I will uh, mm, I will create. Okay, let me now run the simulation. You will be seeing both the pedestrian coming from this area to this area, and vehicles coming from these areas. So let me run this simulation. You can see the people movement from here now. People are coming from this area to this area, and as well as the cars are moving from these area. So if I zoom a little bit, shall let me change the demand matrix a little bit. Let me say it is 50 people, uh, and from here also there are 50 people. Let me run this and see. So I will run the simulation again. Now there are more people coming from this area. You can see, and it is interacting with these vehicles. So this is a pedestrian simulation which I have created in InfraWorks. Now its display can be improved. Okay. Sir, if we let that there is a bridge for pedestrians, uh, what will the simulation then? A bridge? What is your question? Sorry, if Yes, you can sir. repeat. If we let that there is a bridge for, I'm saying that if we let that there is a bridge for pedestrians. Uh, so yeah, sir, as PRT has a bridge over the road, traffic moves along with the pedestrians. What will the simulation then? Okay, we can run that simulation as well, but
In that simulation, the people will not be interacting with the vehicles. As you can see here, the people are interacting with the vehicles. So very easily we can create that. We can simulate that and forwards. Okay, sir, fine. ओके इसमें कोई क्वेश्चन है आप लोगों का No, sir. अच्छा यहाँ पर मैंने इस एरिया की हाइट्स चेंज की है ना इस एरिया की भी और तो ये मैंने क्यों किया है कोई मुझे इसका जवाब दे सकता है why I was changing height of these two areas anyone Because sir, road is an upper yes आप सही कह रहे हैं limit. क्योंकि ये जो एरियाज है इससे ही पीपल मूवमेंट जो है स्टार्ट हो रही है तो जब तक ये रोड जो है इस एरिया के अंदर नहीं आएगा तो ये फिर सही तरीके से काम नहीं करेगा तो मैंने क्या किया इफ आई क्लिक दिस अगेन सो मैंने क्या किया कि मैंने इसकी बेस को 368 किया और हाइट को 6 किया ताकि ये जो रोड है इस एरिया के अंदर आ जाए आप देख ले अगर मैं इसको सेलेक्ट कर लूं तो ये वॉक वे जो है ये हाईलाइट होता है तो इसका क्या मतलब है कि दिस एरिया इज कनेक्टेड टू दिस वॉक वे बात समझ में आ रही है Yes, sir. अच्छा अभी हम जो है इसकी रिजल्ट्स जो है आपने तो शायद ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियर अभी नहीं पढ़ा होगा लेकिन अगर हम रिपोर्टिंग में क्लिक कर ले और लेवल ऑफ सर्विस को सेलेक्ट कर ले तो ये अब मुझे हर एक करोड़ का जो नाम है इसको हम मुझे दे रहा है कि इसकी लेवल ऑफ सर्विस क्या है तो इसको भी मैं देख सकता हूँ फिर जब आप इंशाल्लाह ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग पढ़ेंगे तो आपको फिर इसको फिर आप इन्फोवर्स को इसके साथ कर ले ट्रैफिक सिमुलेशन रन कर ले फिर आपको बहुत समझ में आ जाएंगी लेकिन अभी मेरी इस बात को आप जहन में रख लें कि दिस इज गिविंग मी द लेवल ऑफ सर्विस फॉर अ रोड एज वेल मैं इसको ट्रैफिक सिमुलेशन के साथ टाई भी कर सकता हूँ चले that was all about traffic simulation मैंने जो आपको इस प्रेजेंटेशन में ये दिया है ये आप इसको ओपन कर ले काइंडली और इसमें आप मल्टी मॉडल सिमुलेशन और बहुत तरीके के आप सिमुलेशन कर सकते हैं और इवन जो कोड आया है आप उसके भी सिमुलेशन कर सकते हैं कि एक वॉक वे आप डिजाइन कर ले किसी एयरपोर्ट में और आप उसकी 6 फीट अगर हम कहते हैं कि 6 फुट का फासला होना चाहिए तो इवन वो भी आप इसमें ये कर सकते हैं कि इन लोगों के दरमियान 6 फुट का फासला हो फिर कैसे मैं इस वॉक वे को डिज़ाइन कर लूँ तो वो भी मैं कर सकता हूँ लेट्स सपोज मैं जस्ट टू गिव यू एन आइडिया इफ आई click this walkway and I click adjust so here I can give many parameters मैं कि इसमें डिले है ये मैं कह सकता हूँ कि इसमें इसकी विड्थ क्या है इसकी ये बहुत बहुत उसमें मैं कर सकता हूँ कि इस वॉकवे की विड्थ क्या है और डिले यहाँ पर लेट सपोज कोई चेकिंग हो रही है तो इस वजह से एक लाइन बन रही है तो वो भी मैं कर सकता हूँ कि इस यहाँ पे कितनी कितनी टाइम की डिले है 60 सेकंड्स की डिले है 120 सेकंड्स की डिले है कोई भी हो तो वो मैं कर सकता हूँ तो दैट वाज ऑल अबाउट infra
अभी जो है मैं रेविट की तरफ जाता हूँ और रेविट में मैं आई विल सर एक ओपन। क्वेश्चन था कि सर ये इतना वर्क को सर हम रिकॉर्ड कर सकते हैं? जी, क्या सर कह एक रहे हैं आप? क्वेश्चन था कि इंफ्रा वर्क की जो ये सिमुलेशन रन हो रही होती है सर इसको हम रिकॉर्ड कर सकते हैं? बिकॉज सर ये जो से ये जो होते हैं ये बड़े बड़े प्रॉपर्टीज वाले सर ये जैसे बैरिया टाउन ये चाहिए ये एक सिमुलेटेड मॉडल वीडियो चला रहे होते हैं सर टीवीज पे इसमें वो गाड़ी मूव कर रही होती है घर बने होते हैं तो सर इसको हम जो आप अब मतलब ये सिमुलेशन चल रही थी तो ये रिकॉर्ड हो सकती है सर इफ्रा वर्क में फैसिलिटी है कि नहीं सर? आप जो है ट्रैफिक सिमुलेशन, मैं आपकी बात को समझ गया हूँ। ट्रैफिक सिमुलेशन हम रिकॉर्ड नहीं कर सकते, और वीडियोस हम रिकॉर्ड कर सकते हैं। आप विजुअलाइजेशन की बात कर रहे हो, लेकिन ट्रैफिक सिमुलेशन हम रिकॉर्ड नहीं कर सकते एज सच। हम इस तरह कर सकते हैं जिस तरह अभी मेरी ये प्रेजेंटेशन रिकॉर्ड हो रही है ना, ये क्लास रिकॉर्ड हो रही है, तो इस तरह हम कर सकते हैं कि एक उसके ऊपर ये प्रेजेंटेशन ये सिमुलेशन रन कर ले और उसको फिर हम रिकॉर्ड कर लें। लेकिन सॉफ्टवेयर में इस तरह नहीं है कि ये रिकॉर्ड हो जाए। विजुअलाइजेशन के लिए फिर दूसरे टूल है वो उस ओके पर फाइन हम सर। कर सकते हैं, लेकिन ये इट इज प्योरली फॉर टेक्निकल रीजंस, ताकि हम ट्रैफिक स्टडी कर ले उसके उसके फिर हम डिजाइन कर ले, वॉकवे डिजाइन कर ले। ये सिर्फ टेक्निकल रीजंस के लिए है। वो आप सही बात कर रहे हैं कि विजुअलाइजेशन उसके लिए, वो फिर हम TDS मैक्स और उस टूल्स में हम फिर वो कर सकते हैं। Okay, so without wasting any time, ओके फाइन let's talk about Dynamo. And here I have a Revit project open. Now, what I will do is I will click on this under the manage tab. If I want to open Dynamo, so what I will do is I will go to under this manage tab, I will click Dynamo. So the, you will be able to, now it will take time. Uh, and my machine is saying that it is not responding, but although it is responding, but it will take time to open Dynamo. But you might remember that what I have told you, that what is Dynamo. So, and I have given that example of of Charles Xavier. So this Dynamo, it what it do is that it extends the functionality of Autodesk Revit. So as engineer Latif has been telling you that through Revit we can uh, go up to 5D. Of course, we have to use then Autodesk Naviswork, but he created only a building. But what if I want to create any other facility which is not building, which is tunnel, which is bridge? So then Autodesk Revit has not got that functionality to model a bridge or tunnel. So then I can use Dynamo to extend the functionality of Autodesk Revit to even do that tasks as well. और इसके अलावा डायनामो और भी जो इवन रेविट करता है, उसको भी हमारे लिए बहुत आसान तरीके से करता है, कर सकता है. Let me close this InfraWorks. Acha, okay. Now I will create. I will first, to show you about the capabilities of Dynamo. Let me create a script. Let me not create a script. Let me show you a script, so that I have created previously. So I will open an existing Dynamo file. I will open that.
So, okay. Now, first, when you open any script or any Dynamo file, so you check the unit of your Revit. So here I will type UN, and why it's not. Chalo, okay, here I will click this project unit. Now it is in meters, so it's so what? Why I have to check this unit and Autodesk Revit? Because um, Dynamo uses this unit of Autodesk Revit. So whatever unit you have, and Autodesk Revit Dynamo will have the same unit. So here I have the unit of meter, so it is good. Now here it is a graph. आप ये देख ले कि ये सारे जो है एक चले let me run this graph, then I will explain what are these things. So let me run this script. It will again take some time, 1 minute or 2, but let's hold on and see uh, what is this, what this graph is, and what it is creating for us. So let's wait for a minute and let's see. चलिए, आप देख ले कि इंजीनियर लतीफ जो है एक काफ़ी वक्त से 2 क्लासेस से तकरीबन 60, लेट्स सपोज इफ आई से 120 मिनट से 2 आवर्स से लगा हुआ है एक बिल्डिंग को बनाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन यहाँ पर मैंने इस स्क्रिप्ट को रन किया और ये बिल्डिंग जो है ऑटोमेटिकली इसने मुझे बना कर दे दी। आप देख लें, इसमें इसमें बीम्स भी है, इसमें वॉल्स भी है, इसमें ये रेलिंग भी है, इसमें ये विंडोज भी है, सारी चीज। इवन जो है अगर मैं इवन ये मेरे लिए ये डायमेंशंस और ये ग्रिड्स और ये सारी चीजें बना के जो है दे सकता है। तो एक सिंपल स्क्रिप्ट को मैंने रन किया और यहाँ पर आप देख ले, आप ये सारी इनपुट्स आप चेंज कर ले। आप जो है आए यानी कि ये ग्रिड है, तो ये चले मैं इसको देखता हूँ कि इसने ग्रिड बनाया। चलो इसने ये ग्रिड भी बनाया मेरे लिए। तो इवन अगर इस ग्रिड इसको मैं चेंज कर लूँ और फिर मैं इसको रन कर लूँ, तो ये जो है कि पूरा प्रोजेक्ट जो है मेरे मेरे लिए दोबारा से बन जाएगा और मुझे कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। बस मैं इसको इसको चेंज कर लूँ, इस वर्टिकल ग्रिड को के ग्रिड के कितने स्पेसिंग, हाउ हाउ इसमें स्पेसिंग कितनी होनी चाहिए, इसको मैं चेंज कर लूँ, तो ये जो है सारा मॉडल जो है अपडेट हो जाएगा मेरे लिए। तो एनी क्वेश्चन इन दिस? आई एम एक्सप्लेनिंग नाउ दिस डायनामो, बट कोई अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कर लें। हेलो, Yes, sir. कोई क्वेश्चन है? No, sir. अच्छा, ओके। So let me delete this whole script and let me delete this whole building as well. Check all.
चले, now this is Dynamo. This is the UI of Dynamo. तो इसमें डायनामो जो है एक विजुअल प्रोग्रामिंग टूल है। प्रोग्रामिंग जो है एक तो आपने इसमें पाइथन की भी क्लासेस ली होगी, तो एक तो वो प्रोग्रामिंग है पाइथन और सी प्लस प्लस और ये सारी चीजें, और एक तो है विजुअल प्रोग्रामिंग टूल। तो डायनामो में अगर आपको प्रोग्रामिंग आती भी नहीं है, आप फिर भी ये डायनामो को यूज कर सकते हैं। और अगर आपको पाइथन की लैंग्वेज आती है तो आप जो है डायनामो को आपको मदद देगी, लेकिन वो फिर बहुत एडवांस लेवल पे। आपको नहीं आती प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, फिर भी आप जो है डायनामो को बड़ी यूज कर सकते हैं, सीख सकते हैं आप। अच्छा, लेट मी क्रिएट अ सिंपल some, let me show you some uh, अच्छा, मैं इसमें एक पॉइंट इसको, अच्छा इसमें मैं यहाँ पे पॉइंट सर्च कर लूँ और बाय कोऑर्डिनेट क्लिक कर लूँ, तो इट्स नॉट ओपनिंग। अच्छा, ये तो ये मेरे पास पॉइंट बाय कोऑर्डिनेट, इसको इसको नोट कहते हैं। अच्छा, लेट मी, इट इज ऑटोमेटिक। आप देख लें यहाँ पर ये पॉइंट क्रिएट हो गया। ये ये नोट क्या कर रहा है अभी, इसने मेरे लिए ये पॉइंट जो है क्रिएट कर दी। अभी मैं चाहता हूं कि ये इन दिस इन दिस ये एक्स डायरेक्शन है, ये वाई डायरेक्शन है, एंड दिस इज जेड डायरेक्शन। So I want to create some points in the y direction. So for that, what I will do, I will double click, and then I will type 0. Let me first, not go to that detail, but let me show you how. Let me say it is 4, let me say it is 5, and then let me connect this. So give me the point. So I am telling Dynamo that give me point which has the coordinates of 0 in the x direction, 4 in the y direction, and 5 in the z direction. So you can see that now I have got this point which have these directions, which have these coordinates. Okay, now I want to create a series of points in the y direction. So for that, what I will do is I will create the points 0 and sorry 0 and let me say I have 100 points, and the distance should be 2. The spacing should be 2. So here you can see that I have uh, no, it's, I'm saying now what this code means that give me points from 0 to 100, give me 2 points from 0 to 100. So I will say give me 20 points. And now let's see. So I have 20 points from 0 to 100. And let me connect this to the y direction. So you can see I have now points of 0 to 100 and the y direction. Now what I want to do now is I want to create a sine wave. Um, uh, so for that, what I will do is I will again double click, and I will say that uh, to create a sine wave, what I will do, I will type maths dot
sign and x. Now I will connect this. Now these are connectors. I will connect these points to this x and then connect this to y. Now a sine wave has been created now, but it is too small. So to make it large, what I will do is I will say multiply by 10, and let's see. Now, I will say multiply by 100, and then again. Okay, let me do this. Multiply by 10. Do this. Okay, okay. Okay, now it's in the x direction. Don't know what's happening. Me type 100. Okay, let's leave that. Uh, okay, now it has created a point in the y direction. Now, if I want to connect those points, so what I will do is I will say nerve curve by points, nerve nerve curve by control points, and it has now I will run this, and now you can see that these points are connected by a line. Okay, now let me create another sets of points in the x direction. So what I will do is I will copy these nodes, and I will say give me. So these nodes are also creating a line. So to create a line in the x direction, I will say give me a line in this. So you can see that it has also created a line, the same line, but it has created a line in the x direction, and the distance it is 10. So if I connect this through a slider, number slider, and if I connect this to this, now if I delete this, and the minimum value is 0, let's make it 10, and if I change this, so you can see that this line is moving. Okay, now I want to create a surface. So what I will do is I will search for a node which is surface dot loft.
And so for but let me connect these two lines through a list. So I will search for list dot create, list dot create, and this, and I will say now it has given me a surface. Now let me change. Now let me change both its x-axis. Okay. Now, okay. Okay. Now, let me create another slider, and let me connect this to this Z. Now, if I want to, you can see the surface has been moving now. Now, if I connect this to this Z, you can see if I change this now, so it is changing in the Z direction. Now, what I am doing is that I'm creating panels in this surface. Now, this node, or what this node has been doing is that it is now creating panel to this surface. Now, I want to create a panel, a rectangle panel of 16 cross 16. Now, it has created some panels on this surface. Now, I want to transfer this to the Revit. So what I will do is I will search for Kindly adaptive. zoom this panel. Yes, Sir, kindly the window full क्या सर ये अखबार लगना. the dynamo wala. आओ जी सर. See. So now I will connect this point to this adaptive, and for the family type, I will type family. So let me search if I have. Now here in this Revit project, I do not have any adaptive family. So let me create an adaptive family. So what I will do is under this file, I will open a family, and I will go to, no, I will create a family from the template. So new family, and from here I will search generic model adaptive family.
So here I will create an adaptive family, and then I will assign to this node the name of this family. So what I would do is first I would create points. ये आपके लिए खैर मुश्किल होगा, आप पहली दफ़ा इसको देख रहे हैं, लेकिन आप जो है फिर इस एडॉप्टिव फैमिली को सर्च कर ले या मेरे इस वीडियो को फिर देख लें, तो इंशाल्लाह फिर ये आपके लिए फिर इजी हो जाएगा. So let me say that these points are make adaptive, and I will connect these points now to spline through points. Delete this. Let me create now first. What you need to do is you need to create a points to create a adaptive family. So you need to create a points. Then what you will do is you need to make that adaptive. Now I make that adaptive. Then I create line connected those points. Now I would create a solid geometry. So this is that geometry. Now I will change its length to 3 inch, and I will make its I will assign material to it. So I will say it is glass. And I will select this and I will say okay. It is glass. Now I have created a simple adaptive family. Now what I will do, of course I can do many other things in this family. I can create a frame around this family, but here let's say this is okay. Now I will load this family to my project. So I will click on this load into project, and press escape. Now in this dynamo, now here under this family type, you will be able to see now the family one. Now here it is family one, which we have just created now. Now I will connect this to this family type and then run. So in the Revit environment, you would be now seeing a surface with a glass panel. So it will take time. ये चीज़ें आपके लिए नहीं है, आपने जो है आप अभी जो है पढ़ रहे हो तो आपके लिए मुश्किल होगा ये एडाप्टिव
فیملی کیا چیز ہے، ڈائنامو کیا چیز ہے، لیکن صرف میرا بتانے کا مقصد ہے کہ آپ کو اندازہ ہو جائے کہ اس سے ہم کیا کیا کر سکتے ہیں اینڈ واٹ از. سو پہلے میں نے آپ کو ایک بلڈنگ کی ایگزامپل دی کہ کس طرح سے میں نے اس کی مدد سے میں نے ایک بلڈنگ، ایک کمپلیکس بلڈنگ تو نہیں تھی لیکن ایک سمپل بلڈنگ تھی، لیکن ریوٹ میں اگر وہ ہم بنائیں تو وہ میرا جو ہے 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ لے گا. لیکن اگر میں نے اس کے لیے ایک اسکرپٹ پہلے سے بنا لی ہو تو سمپلی جو ہے اٹس اے میٹر آف سیکنڈس. اور اف وی ہیو اگر ہمارے پاس تیز مشین ہو تو اٹ از اے میٹر آف سیکنڈز، اور نہ ہو تو سمپلی اٹ ول ٹیک اے منٹ ٹو رن دیٹ اسکرپٹ اونلی. تو آپ دیکھ لیں یہ میں نے جو ہے ایک کمپلیکس جیومیٹری تو نہیں ہے، بس ایک سمپل سرفیس ہے، یہ میں نے اس میں ٹرانسفر کر لیا. اور اگر میں اس کا جو ہے وہ کوئی بھی چینج کر لوں، اگر یہ پیرامیٹرز میں چینج کر لوں تو یہ ڈائریکٹلی میرے یہ جو ریوٹ میں جو یہ بن گیا وہاں پر بھی یہ چینج ہو جائے گا. تو ایک تو یہ تو آپ دیکھ لیں کہ میں نے اس کو اس ڈائریکشن میں تھوڑا کم کیا تو میں ریوٹ میں آ جاؤں تو یہاں پر بھی یہ چینج شو ہو گیا میرے سامنے. تو آپ یہ ایگزامپل ٹھیک ہے، آپ کو کچھ نہ کچھ تو سمجھ میں آیا ہوگا کہ تھرو ڈائنامو what we can do and what is the potential of if we use this tool and then model in Autodesk Revit. تو ایک سمپل سا نوڈ ہے، ایک سمپل سا اسکرپٹ ہے، اس کو نوڈز کہتے ہیں، پھر اس کو ہم جو ہے ریوٹ کے ساتھ کنیکٹ کر سکتے ہیں. So any question? No, sir. اچھا اوکے. Thank you very much, all of you. It was wonderful to interact with you, to teach, and I'm very thankful to the organizer for this opportunity.